Hello everyone, my name is Manish Kumar and you're watching Software Circle. Today I came up with another video that is related with bundling and minification. In last video, we had learned about implementing dashboard CSS for our uh, dashboard CSS for our admin for our admin portal, right? So I'll just quickly run it so that we will get to know that we are on the same application and we are still in the process of building that application. So today we will learn about bundling and minification. This is the ASP.NET MVC feature that came bundled with it. So there are two concepts, bundling and minification. Bundling is something, as the name suggests, this bundles things. First, we'll just have a look at the website. Okay, this was the website which was publicly available. Now we'll go with admin and dashboard. See, the dashboard we had implemented this CSS for dashboard. Okay, and now go back and just press F12, go to the developer mode and just press F5. Okay, let's go to network tab. Go to see all. In the network tab, we'll get from all, we get to know that uh, how many things has been loaded while rendering this page. So these all are the things has been loaded. There are number of CSS files, then jQuery, JS files, then multiple PNG files. Okay. Now we just have a filter here for whether we want to see all. If page XHR is nothing but an Ajax call, if any Ajax call has been made, then with the JS, all JS related files will be visible here. CSS, all CSS files are here, which call was made. So basically, what a browser does. So when we just try to load this page, the whole HTML with CSS and JS loads on the web page. Now, to work this page efficiently, we need many things like HTML, CSS for rendering, uh, to show the text and images at the right place with beautiful rendering. JS is also required for things like when I click on when I mouse over, a pop out a context menu appears. Then this is just changing the image and text. When click on this, so everything bundles together and then our page gets rendered. Bundle means with including everything uh, including everything leads to this page to us. Okay. Now, so what usually happens, like as you can see, uh, the status is 200 means the call has been made to the server when we load the page, and this page has this every file has been called from server, and it has brought to the web page. So, so if I just go to CSS for now, so see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 calls which has been made to just to get all these CSS files on the page. Right now, see browser can make simultaneously only certain number of calls. Usually it is 6 for all modern browser. So when they make 6 calls, after that 7 they cannot make the 7th calls. They will have to wait for the 7th calls until one of them gets finished. So this is how it works. So that the waiting time increases, and the more waiting time, the more it will take for our page to render on the browser. So what bundling says? So bundling is the process of combining multiple files into a single file. We can create a bundle of a specific file, a bundle of all CSS files together. We can again
bundle all JS files together in one call. So same way, so CSS and JavaScript files can be clubbed together. Obviously, we can always keep it separate, and we can we can load it on the browser. So suppose we bundle all JS code together, and only one call will be made to load all the JS. Again, for CSS also, we bundle it together, only one call will be made. So basically in two calls, we will get um, all the required files on the browser, and browser our browser will render the page fast. So basically, when we bundle it, it improves the rendering speed of our web application. Okay. Okay. Now I'll come to the minification. What is minification? So see, minification is okay. So in one file, uh, just go to the source save the content. Okay. Yeah. So maybe style.css. So see, uh, if I open the style.css, we can see there are comments, right? So there are many comments, there are spaces available. So because of these things, the size of the file increases. But this is okay to have these, okay, or best to have these comments and spaces so that it could be available in the readable format and we can change those. But on the browser, once it is on the browser, we are not supposed to read through or fix something on something in the CSS or JS files, right? So for this, what minification it does, that minification removes unnecessary data without affecting the functionality. It removes comments, extra spaces, converts converts large variables into small variables, so the file size could be decreased. The same it does for say, JS also. So that is called minification. Okay, so we will go through how this thing is done, and we will also see that it how it is achieved, and in the browser, in the network tab, we will see that how many browser makes the call. Okay. Okay. So we'll just kill it for now. We are here. Okay. So Visual Studio by default has uh, provide an extension for bundling and minification. We need not to do anything else. Just go to extension, manage extensions, go to Visual Studio Marketplace, just search for bundle. So we'll find an extension for bundler and minifier. Since I have already keep it installed, so see you can see the green sign. This extension is already installed. Okay. So I've already installed it. So let's close it. Now मैं लोड किया था public page is already there here. Views. Okay. www root में हम जाते सपोज JS में गए, तो जस्ट से main.js, ठीक है। अभी जब भी किसी भी फाइल का मिनिफाइड वर्जन क्रिएट होता है, तो .mean.js क्रिएट होता है। ओके, so .mean.js is there. Since we have already implemented pre-written template, तो उसके साथ ही हमें ये सारा JS आया था, जिसमें कि bootstrap mean.js was already there. तो इनका mean.js अवेलेबल था, स्टिक नैप का अवेलेबल नहीं था, इस jQuery 3.3.1 का भी अवेलेबल था. So as it is हमने कॉपी किया था. You may have seen in my first video where I had implemented this CSS. Okay, so let's see all.crossal.mean.js का भी है, इसका नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको मिनिफाइड कैसे करते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे जेस पे, और सी हमारे पास ये एक ऑप्शन आएगा उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद, बंडलर एंड मिनिफायर। जस्ट क्लिक ऑन दिस। अभी इसके क्लिक होने पे ये अभी क्या करेगा, इसका हमें सी ये एरो अपीयर्स हुआ यहाँ पे, अभी हम क्लिक करेंगे सी main.mean.js, so we'll just open main.js, ठीक है।
ये एज इट इज। नाउ हम ओपन करते हैं main.main.js। सी वन लाइन में ऑल स्पेसेस रिमूव्ड, एवरीथिंग, ऑल कमेंट्स रिमूव्ड, तो स्पेस छोटा हो गया। ठीक है, अभी ये तो एक बात हुई, बट हमें ऑलरेडी जब हम ब्राउजर पे इसको यूज कर रहे हैं, मतलब अपने एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, तो हमें ऑलवेज ये मिनिफाइड वर्जन में नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये डिबग कर सके राइट इन लोकल एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। विल ऑल्सो कम टू दैट। ओके, जब भी हम किसी फाइल को मिनिफाई करते हैं, अभी ये एक बंडल कॉन्फिग डॉट जेसन हमारा क्रिएट होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, बंडल कॉन्फिग डॉट जेसन। सी हमने यहाँ ओपन किया बंडल कॉन्फिग डॉट जेसन। ठीक है, अभी इसी इसने ये जेएस क्रिएट किया। अभी हम सेम वे में सीएसएस में जाते हैं। हम साइट डॉट सी एस एस, सपोज स्टाइल डॉट सी एस एस है, साइट डॉट सी एस एस, हम इसको करते हैं मिनिफाई। ठीक है, तो अभी ये इसने मिनिफाई किया उसको। अभी साइट डॉट सी एस एस देखो ऐसा है, ऑल इन वन लाइन, स्पेस गॉट स्क्वीज्ड। ठीक है, और सेम वे बंडल जेसन में एक और कॉन्फ़िग क्रिएट हो गया, साइट डॉट मिन डॉट सी एस एस। ठीक है, ये तो हुई इसकी बात। अभी हम देखेंगे कैसे ये लोड करेंगे। ओके, हम जाते हैं इसमें व्यूज में लेआउट, सिंस हमारे मोस्ट ऑफ द स्टाइल सी एस एस एंड जे एस यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अभी अभी देखो यहाँ पे मीन डॉट सी एस एस ये ऑलरेडी रेफर्ड है। जितना भी यहाँ रेफर्ड था वही हमारे ब्राउजर पे लोड हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें सिंपली क्या और एक और बात, हमारे पास डेवलपमेंट में और इसमें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में और हमारे ऐसे अ, अ, हमारे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, मतलब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हमें ऑलरेडी वो दिखना चाहिए राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम टैग ऐड करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि भाई ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में किस तरह का टैग ऐड हो, मतलब कौन से सीएसएस लोड करे, मतलब सीएसएस एंड जेएस हमें विदाउट मिनिफाइड वर्जन वो लोड होना चाहिए। और वही जब वो उधर जाए, अ, जब वो सर्वर से क्लाइंट साइड पे वो जाए, तो वहां पे वो इस तरह का लोड नहीं होना चाहिए, वहां पे ऑलवेज मिनिफाइड वर्जन ही जाना चाहिए। ठीक है, कि जस्ट तो हमारे पास ये ऑलरेडी एक पेजेस करके हमारे पास था, हम जस्ट यहाँ से कॉपी करते हैं। ये बस हमारे पास था, हमने क्रिएट रखा था पहले से, इसलिए हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, अदरवाइज ऑलवेज राइट इट। तो ये हमने जस्ट कॉपी किया, ये हमने जस्ट यहाँ से रिमूव किया। अभी देखो, यहाँ हमने बोला डेवलप इंक्लूड डेवलपमेंट, तो इसका मतलब है जब भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रहेगा वो इसको लोड करेगा इसके अंदर के। एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्सक्लूड, जब भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है इसको एक्सक्लूड करो। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है तो इसको लोड करो, इसमें आपका स्टाइल डॉट सी एस एस डायरेक्ट वही विदाउट मिनिफाइड वर्जन है। ठीक है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रहे कौन सा एक्सक्लूड करो, तो एक्सक्लूड में हमारा यही रहेगा कि स्टाइल डॉट सी एस एस एक्सक्लूड करो। बट अभी के लिए हम एक्सक्लूड को नहीं फोकस करते हैं, हम अपने लगते हैं कि भाई ताकि हमें देखना कैसे काम कर रहा है, हमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में व्हाट वी विल डू, वी विल we will reference all those minified version here to see. And before that, पहले हम मिनिफाइड वर्जन को लोड करते हैं। मिनिमाइड इसका ऑलरेडी मिनिफाइड है, यहाँ हम बोलते हैं
elegant hyphen icons dot mean dot css magnific pop-up dot mean dot css nice select dot then mean dot css ऑल क्रॉसल mean dot css ऑलरेडी है mean dot css ऑलरेडी है और यहाँ भी हम बोलते हैं mean dot css। ठीक है, अभी ये सबका mean dot css यहाँ लोड होगा, लेकिन हमें अभी क्या करना है कि भाई ये हमें ऐसा रेफरेंस नहीं करना है, हमें किसी एक फाइल में हमें मर्ज कर देना है इन सबों को। तो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट ये कट करेंगे यहाँ से। ठीक है, हमने क्या डिसाइड किया कि हम स्टाइल डॉट मीन डॉट सी एस एस में ये हम सब कुछ मर्ज कर देंगे जितना भी हमें एक्सपेक्टेड है। तो हम यहाँ जाते हैं स्टाइल डॉट मीन डॉट सी एस एस, तो नाउ हम जस्ट कॉपिंग इट हियर। स्टाइल डॉट मीन डॉट सी एस एस में हम ये सारा कुछ कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये आउटपुट फाइल नेम हमारा किस नाम से ये लोड होने वाला है, इनपुट फाइल्स मीन्स this is an array, so with comma separated will just define which all files we need to bundle together which will be loaded as this file name। ठीक है, अभी style dot mean dot css उधर लोड होगा और उसमें हमने जितने भी यहाँ पे लिखे हैं कॉमा सेपरेट करके वो सारे फाइल्स एक साथ बंडल हो जाएंगे। एंड जस्ट टू माइंड वन थिंग, हमें सीक्वेंस में देना चाहिए भाई, किस सीक्वेंस में हमें लोड करना है वो सेम विथ जेएस। अभी तो देखो, अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, और सी एस एस है हमारे पास, तो डब्ल्यू डब्ल्यू रूट स्लैश यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे। ये हमने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे नहीं, जस्ट ठीक है, नाउ आई नीड कॉमा each of them। I'll just cut it from here, I'll just paste it here, उसी कॉमा कॉमा कॉमा। तो अभी ये सब कुछ एक बंडल में आ जाएगा और ये बंडल प्लस मिनिफाइड वर्जन हमारा इसमें आ जाएगा, मेन डॉट सॉरी 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 यहाँ तक सी एस एस। ओके, और सबसे लास्ट में ये सी एस एस चला जाएगा। ठीक है, सेव किया हमने। नाउ अब हम जेएस पे आते हैं। जेएस पे हमारा मीन डॉट जेएस मीन डॉट जेएस मीन डॉट जेएस लिखने main.js, main.js, console.main.js, main.main.js। ठीक है, फिर इसमें भी हम इसी तरह डाल सकते हैं अभी just saying in current I'm saying in development environment include this, उसी तरह हम स्टेजिंग प्रोडक्शन सब दे सकते हैं। Just main.js just from here dash copy it paste
www.js. Okay. Just go dot be missing here. File dot css. This main dot yes. Okay. It is main.js. Okay. So this will be loaded with main.js. This all will be bundled together. And mind one thing, jQuery की फाइल टॉप में रहनी चाहिए because for these all they need jQuery like all browser someone has written mix it up main.js. So they have written a jQuery script and they need dollar for this. So jQuery main.js should be always top. Just save it. And thing if you click on bundle config, so bundle minifier, enable bundle on build. Yes, you usually it loads something. So see installing bundle, finishing installing bundle minifier NuGet package. So it quickly installs. Click on this just to verify it. Bundle on build. Okay. तो जब build होगा तो ये bundle करेगा. So just press F5 and will verify whether it works. Building started. See, begin processing bundle config.json. Oh, Samay record. Something has broken. Okay. Expected colon found. Okay. Okay. Something has broken. Okay. Site.mean.css. Okay. So the error came up because we had not created mean files for each of the file which we had used as for bundling. So just to have a look here. Elegant icon dot css. Elegant icon dot c dot main dot css. Main dot css was not there. You can look at this plus icon. So you need to click on it, go to bundle, minify file. So for each and every file which we are going to use as the main file, you need to right click on it and click it. Same is available for JS. Same we need to do with this minify. So it will create a mean file and we can include it. Along with that, I just while fixing this, I have also instead of merging everything in main.js, though it will still work as it is, but I've just changed the file name for as softwiz.main.js. So in runtime, it will create a softwiz.main.js. You can see that it has added with all the bundling and minified file together. Same with the softwiz.main.css. I've just renamed it, and same we need to reference it in our layout file. So you can see js softwiz.main.js, and here is style sheet softwiz.main.css. So by doing this, we can bundle it, and let's run it and we'll show you how does this bundling and minification works. Okay, site is good. Okay. Okay. Along with that, I've also changed the logo. So it's like there are many free websites available for change like creating a logo. So I just used the canva.com and created a, a just a simple logo, and I've just replaced it. Okay, the image file.
So I just press F12 here, and it's already loaded. I'll show you some magic. Just press the F5 in the network tab. I'll go to all and we'll go to JS. So you can see before we used to have multiple JS files. Now only one JS file got loaded. That's pretty fast. We'll go to CSS. So see, CSS also only one CSS got loaded, and this was got loaded because this is already referenced in our layout file as this gets the CSS from Google API CDN. Okay. So all static files which we have in our project that got bundled and has been loaded by one call only. Okay, now we'll go to all. So look at this. There were so many CSS and JS files that all clubbed together with two files. See, about these JPG files and PNG files. For all those images, also we can. There is a technology. There is a we could say the CSS feature which is called image spriting. So I have already created a video on image spriting. You may check the link in the description below. So with the image spriting, you will load only one image, and with the help of CSS, you will scatter all those image on your page. So you can check out the link. Okay. So this is how bundling and minification works. I did not open it. I'll just show you how does it look like. Just open and CSS also open. See, all minified, JS also, minified, and everything is bundled together. Okay. Okay. So this is how it is. This is how it is. So basically, in your local system, you don't. I mean, when you are developing, you don't want this to be clubbed together and also minified. So as described in development environment. So use exclude. So here we can also use production, staging, so and so forth we can use, and with the help of include and exclude, we in one of them we can have a the actual files, all those files we can load without the without the minified version, and in another one we can load the minified version. Same for JS. Okay. So this is how this bundling and minification works in JS. So I'm just summarizing it. Bundling is nothing but it speed ups our rendering of the or rendering of the page, and minify because there are, instead of multiple calls, we are bundling all those files together and uh, calling only one server call and loading it. Same for minification. मिनिफिकेशन में एक्स्ट्रा स्पेसेस कमेंट सब सारे रिमूव हो जाते हैं और उसको मिनिफाई करके इवन इनमें से रीनेम लोकल, सो लॉन्ग वेरिएबल को शॉर्ट करके वो वहां पे पुश करता है मिनिफाइड वर्जन. सो यू मे also ask that how come this is how come this comments and all is there. So since ये हमने just download किया ये CSS and use किया हमने अपने पास, we will need to see that how this is coming up. Maybe jQuery कोड लिखा है जिससे जब ये लोड होता है तो ये फेच करता है those comments and put it here. So we'll need to see, but in minification you will not find these all things. Okay, that's it guys. Thank you.